क्या सबसे ज़्यादा मज़े पता कब आता है, जब आप दो लोगों को देखते हो ऐसे शो पे जो बिल्कुल आपस में बात नहीं कर रहे होते हो, एक दूसरे को एटीट्यूड दे रहे होते हो, मैं कहता हूँ इन दोनों के बीच में ना प्यार होने वाला है। आई वाज टेलिंग तेजू द अदर डे कि 3 days into टेम्पटेशन एंड इन दिस सीजन, तो जो उसने डिस्क्राइब किया तो मैंने बोला, मैं कहा आप जिस लड़के को डिस्क्राइब कर रहे हो आपके बिना, जब आप नहीं हो और जब वो एक अच्छे सोशल सेटअप पे होता है, वो डिस्क्रिप्शन है ही नहीं उसकी। इज समथिंग दैट लिव्स विद यू फॉर अ लाइफ टाइम, यू नो, और वो बार बार होता है, आती रहती हैं, अब यू गो बैक टू देम एंड Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. Today I'm in conversation with the man who's always in demand, Karan Kundra. Hi. Thank you. How do you feel always being in demand? Am I? Yeah. I feel fabulous. I'm very grateful. I have to start off by asking that, you have said this, that it's cliche to actually find a love interest in a reality show, but you did. And do you think that you want others to also get lucky and that's why you somewhere support Temptation Island? I support love and I support temptation at the same time. Considering that I have been contradicting my own cliches all the time, it just proves that I learn. And I think I do support love. I find it very cute. When क्या सबसे ज़्यादा मज़े पता कब आता है, जब आप दो लोगों को देखते हो ऐसे शो पे जो बिल्कुल आपस में बात नहीं कर रहे होते हो, एक दूसरे को एटीट्यूड दे रहे होते हो, मैं कहता हूँ इन दोनों के बीच में ना प्यार होने वाला है। And then that happens. And तो बड़ा मज़ा आता है because आप you a little more experienced, a little more more angles आपके पास है, कैमरास के भी हैं, तो आप देख रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो और उनसे ज़्यादा आपको पता होता है, मज़ा आता है। A lot of stories actually start like that. Yeah, I like playing Cupid. Even the fact that you've not only played Cupid, but you've been a mentor on different shows. And my question to you is, when it comes to mentoring for you and your love life, where do you think you need that mentoring or guidance? I guess I am always open to hearing. Like I was telling Teju the other day कि 3 days into Temptation and in this season, I learned something from a 21-year-old. And that is? I can't tell you, but it's fantastic. See, again, if you start observing, which an actor should, actors shop for life, right? You're a sum total of all the experiences that you had. वो करते करते जब आप उसी को अमल करना शुरू करते हो ना, तो वो it becomes kind of nice. So you should always be open. You never know where you're gonna learn something from. And as for me, I think my own experiences, my own journey, whatever I've learned and what I learn from others is what I use for myself. What is the most intriguing part about actually hosting a love show? The most intriguing part about hosting a love show is a lot of people, I would say denial. Denial? Yeah, because see, you unfortunately or fortunately आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पर आपको दिख रहा है सब कुछ, अलग-अलग एंगल्स, उनके पर्सपेक्टिव्स, सबके पर्सपेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल टेम्पटेशन पे जैसे कि एक लड़की है, उसने अपने बॉयफ्रेंड को डिस्क्राइब किया, उसके थोड़ी देर पहले मैं उसके बॉयफ्रेंड को मिला हूँ, ठीक है, जहाँ वो नहीं थी। तो जो उसने डिस्क्राइब किया तो मैंने बोला, मैं कहा आप जिस लड़के को डिस्क्राइब कर रहे हो आपके बिना, जब आप नहीं हो और जब वो एक अच्छे सोशल सेटअप पे होता है, वो डिस्क्रिप्शन है ही नहीं उसकी, so that's denial, right? हो सकता है कि वो आपके सामने ऐसा नहीं हो and you've been in a relationship for say 10 years and you're describing your boyfriend, but your boyfriend is not that. You put him in a situation and then see how वो कैसे उभर के आता है। कुछ लोग हैं जो कि दर्द सह रहे हैं, और वो डिनाइल में हैं, वो सुन रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, उनको होती हैं, पर वो आपके रिलेशनशिप में भी हैं, बट या तो आप यूज्ड टू हो गए हैं, या तो आपने गिव अप कर दिया, या आपको पता ही नहीं है। आप ट्विटर पे जाके लिख रहे हैं दिस इज टॉक्सिक, अरे आप खुद भी टॉक्सिक हो, मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना? तो वो डिनाइल, जब हम देखते एज अ होस्ट, ऐसे ना फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब हम देख रहे होते हैं अलग अलग परसेप्शंस और अलग अलग डायलॉग कैमरा से, तो हमें रियलाइज होता है। पर एज एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि आप दूसरों की इंस्टेंसेस को देख के खुद से कभी कभी रिलेट कर लेते हो कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, अच्छा, या माय पार्टनर इज आल्सो लाइक दैट। व्हाट difference do you see as a boyfriend in yourself from when you used to date before versus now?
I think I am a lot more sure about myself कि मैं कितना सहूँगा. You can't cross a line anymore. You know, अब मेरी बस हो गई, तो अब मुझे पता है. You know, I'm not gonna take stuff anymore. So I'm now very sure कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या नापसंद है. Yeah. Is there something you miss about being single? No. I mean, of course, single life is very, very different. But if you see me and Teju, we're pretty much very. देखिए, our chemistry is very chilled out. Yeah. You know, तो वो जो single अगर मैं या तो मैं travel नहीं कर पाता, या मैं ये नहीं कर पाता, मैं पार्टी नहीं कर पाता, खा नहीं पाता, मैं सब कुछ कर रहा हूँ. You know, so I'm कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ. You look very emotionally available ever since you started dating Tejaswi. Do you feel like that? I also so I also think that's because of Big Boss. Big Boss teaches you कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. Now, if I had 100 people in my life and now if I have 5 people, तो वो attention जो मैं 100 में बांट रहा था, वो अब इन लोगों पे है जो matter करते हैं. Right? So you see a lot more focusing on them rather than people who don't deserve it. So you get very when you do a show like Big Boss, you understand कि ये मेरा दोस्त है और ये नहीं है. ये मेरे लिए feel करता है या करती है या ये नहीं है. So you know you basically आप सारा noise जो है वो cancel out करते हो और आप when you focus everything on those people, तो automatically ऐसा ही लगता है कि वो बहुत you know it's a lot more and it's well deserved. Even, you know, because your relationship has been out there in the public, is there a downside to kind of, because there are so many fans, there's a whole clout that loves you, is there a downside because your relationship is so much out there? To be honest, I don't get work because of this, right? So it's not affecting my work. Okay. Correct? I don't get films because of this, or I don't get shows because of this, or I don't host reality shows because of this. That happens solely because of what I have brought with me over the years. And I've always been very open about my life and everything is out there. So yeah. Whenever I speak to actors and, you know, actors who are single, and I tell them that, you know, are you open to dating an actor? And they always say कि नहीं, because Correct. you know, actors को date करना difficult होता है, time is an issue, actors usually kind of are into themselves. Yeah. It becomes very difficult. How are you managing that professional actor and love life while you're dating an actor? I think Teju is also very dedicated. You know? In a relationship. Yeah. Uska, so you know, no matter what, no matter how far we've packed up, we're always figuring out how to get in touch and I mean get together, and it all depends relationship to relationship. So if you have the right person, तो फिर सब कुछ sort हो जाता है. But it has, to be honest, I am dating an actor and she's also dating an actor, but ऐसा लगता नहीं है. When things go wrong in a relationship, how do you probably sort it out, or how have you managed to become a little more calmer? It's the willingness to do something about it. You know, तो वो आपका relationship अगर matter करता है, देखो लड़ाइयाँ तो होनी है. हाँ. ठीक है, भर के होनी है. ठीक है, और छोटी छोटी बातों पे भी होनी है, बड़ी बातों पे भी होनी है. अब आपके लिए वो person कितना important है, उस पे डिपेंड करता है. ठीक है, अगर आपके लिए एक्चुअली वो पर्सन इंपॉर्टेंट है तो आप एक दिन 2 दिन सड़ के रूठ के मर के आप आ ही जाओगे साथ में. ठीक है. अच्छा, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है पर्सन तो एक बार झूठ कर अपने आप को यू नो एक्टिंग करके या आप ये अच्छा है तेरे लिए टाइप करके मना लोगे. दूसरी बार फिर आ जाओगे, 5वीं 6ठी बार ना आप कहोगे screw this. Yeah. Okay, I'm going to give you a few hints and you have to tell me what tempts you about these things. Yes. Okay. So the first one is, what tempts you when it comes to food? मेरी शक्ल देखो. Food is very tempting. Yeah. And it's not good for my career. But that one dish that you feel like, अरे I can't. देखो, ऐसी कोई डिश नहीं है. ठीक है, आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा और ये सुबह मुझे मद्रास कैफे ले गई है और मैंने घी वाली इडली खाई है. ठीक है, तो just period, food, period. It's fine. Yeah. One thing that you get tempted when you shop. Oh, after cars and watches. Perfumes. Perfumes. हाँ, नहीं मतलब वो तो हो जाता है. ओवर क्रेडिट अलाउंस में क्या लिमिट के ओवर चले जाता है. Perfumes, okay. Yeah. One travel destination that tempts you every time to go to that place. No, I like traveling. I like you know exploring cultures. तो अलग-अलग cultures मुझे explore करने अच्छे लगते हैं. And to learn about them, observe people, how they react.
you know. तो So there's not that one particular place. no, it has to be different. One thing that tempts you when you're at work or on a film set or on a set, yeah. Pack up. No matter how glamorous it sounds, it's tiring. Yeah, it is. It's very tiring. So you know, आपको बस ये होता है कि जल्दी खत्म कर दो यार. Because you know, I'm very passionate about my work. Yeah. ठीक है. तो अगर प्रोड्यूसर जो भी EP जो होते हैं उनका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा फिल इन करना और हमारा काम होता है कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देना. Right. तो वो क्लैश तो रहेगा हमेशा. They are also right, we are also right. We want to give our best for the product and उनका काम है क्रैम करके जल्दी करना. तो वो रहती है. Yeah, or even probably sometimes going back to vanity. I hardly go to the van. Really? I like to be in that zone. Depends. If I'm on a film set, then I'm hardly going back and forth. I try to be in that environment in my character. TV set पे अलग होता है. आप शॉट देख के वापस चले जाते हो. Yeah. तो खाते हो पीते हो Instagram चेक करते हो. फिर आ जाते हो. But you know, I have a very cliche question. You know, when Thank You for Coming came, the amount of people that rooted for you was insane. I know. I saw. I was like, wow. Yeah, I saw. That's why I gave my introduction. What I said. Why don't we see you more of you in films and stuff like that? I know, right? Good question. Thank You for Coming happened. Yeah. You know, and I also saw what you saw. I didn't expect it because I've shot for the film. I know it's a guest appearance, and they were kind enough to give me a a sincere thank you, Karan Kundra, in the beginning. And I was like, ठीक है. But then all these videos started coming in. First from the Toronto Film Festival, then from here, there, and then all of us actors started sharing all of this. And I was like, बड़ा प्यार मिल रहा है यार. हाँ. And then all the messages started coming in. Film तो film ही होती है at the end of the day. You know, so I'm like, हाँ अच्छा है. But again, films is something that, you know, television, OTT shows are very different. Film is something that lives with you for a lifetime. Yeah. You know, और वो बार बार होता है, आती रहती हैं. You go back to them, and there I think I'm trying to manifest something that I want to do. Yeah. And leave a legacy behind. तो वो होएगा धीरे धीरे. With time. Yeah, I guess so. Okay, last thing. One thing that tempts you about Tejaswi. Oof. Physical attributes. I think एक तो जब वो साड़ी पहन के काजल लगा के आ जाती है, ठीक है. And otherwise, just the uncorrupted, unfiltered person that she is, good and bad. Sometimes it's pretty dangerous कि वो क्या बोल देती है. Yeah. But in a very same way, I also really like it कि उसके इधर कुछ है नहीं. लोगों के अंदर होता है. वो बोलते नहीं है. पूरी उम्र नहीं बोलते कि उनकी असलियत, मतलब असली में क्या सोच रहे हैं और वो क्या नहीं, क्यों प्रिटेंड करें. No pretense. She will tell you as it is. हाँ, कुछ ये अच्छा नहीं है. अरे इतनी मेहनत की है, नहीं अच्छा नहीं. You can't compare it with that. देख तेजस्वी मत बोल, तो थोड़ा रख लेते हैं. हाँ तो ठीक है, मत पूछो. But that shows her honesty. Yeah. So that's what I'm saying. It's kind of frustrating and adorable at the same time. Same time. Yeah. Lovely. Thank you so much. It was so nice chatting with you. We wish you all the very best for Temptation Thank Island you so and everything much, in the and future. thank you for taking out your time and coming all the way here. No worries. Thank you. Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe to Instant Bollywood. And I'm sure आप already कर रहे हो. So